Good morning, students. Welcome back to physical education classroom once again. Already you have studied the chapter for your exam, but I will start chapter 2 once again. Muscular system. Look at your book. What is muscle? Muscle is a tissue which is highly specialized for the contraction, and by means of this, movements are performed. It is composed of cylindrical fibers which correspond to the cells of other tissues. What is the meaning of this portion? Basically, muscle is a special kind of contracting tissue which actually help to different types of movements and they perform different types of activities. And muscle is composed of cylindrical fibers which actually fused with other tissues. These are bound together into a little bundles of fiber by a form of connective tissue. So different types of tissue combined together to form a connective tissue. I mean, they actually help to bond with each other, different types of tissues together. Next, myology is the term used to describe the study of muscles. So, इसको याद करना है. The study of muscle, that is known as myology. Next, types of muscles. Basically, muscles are three types, which consist of specialized contractile cells. First one is a voluntary muscle or skeletal muscle. Next, involuntary muscles or smooth muscles. And the last one is a cardiac muscles. Voluntary of skeletal muscle. Skeletal muscles are also known as stripped or straight muscle. I mean, they have a stripe जैसे होता है normally शर्ट पे वैसे striped muscle है, and that's their straight muscle. Have a alternate light and dark band on its fiber. I mean, they have light and dark bands, which gives the muscle as a whole its striped appearance. जिस द्वारा normally muscle को देख के कैसा लगेगा? The muscle is specially striped. These muscles are also called voluntary muscles. For what? Because it is the only muscle type which is under conscious control. Voluntary muscle मतलब which muscle is normally under our control. I mean, हम लोग खुद उस muscle को control कर सकते हैं. That's why they are voluntary muscle. Skeletal muscle tissue form flesh of the body. Skeletal muscle fibers are cigar set and are multinucleated cell. So normally, skeletal muscle look like a cigar shape. I think cigar जैसा उसका shape है, cylindrical shape, and also multinucleated. There are lots of nucleus present there. They are the largest muscle fiber types, ranging up to 30 cm in length. Normally, skeletal muscle are 30 cm long. When these muscles contract, they pull on bones or skin, and thus the gross movement of the body or changes in our facial expression takes place. I mean, when this type of voluntary muscle contract itself, different types of movements of body and the facial changes are takes place. These muscle tissue can contract rapidly with a great force. मतलब बहुत जल्दी contractive हो जाता है and also get tired easily. बहुत जल्दी tired भी हो जाता है. And must rest after short period. थोड़ी देर बाद muscle को rest देना जरूरी हो जाता है. The nerve fibers from the nervous system stimulates the skeletal muscle. इसके नीचे दाग लगाना. Normally, nerve fibers from the nervous system stimulates the voluntary muscle to do any activity or strong contraction takes place. This contraction brings the whole skeletal of the part of the into movement. So what is the gist of this portion? Normally, these voluntary muscle are our control and they consist of long cylindrical fibers. They have striped band, I mean dark and light band. They form flesh of the body. Normally, skeletal muscles are multinucleated cells, look like a cigarette. The largest muscle, 30 cm up to long, and the muscle contract very rapidly with a great force
and get tired easily. And the nervous fiber or nerve fiber from the nervous system stimulate the muscle to perform any activity. Now, involuntary or smooth muscle. Smooth muscle may also be described as non-straight or involuntary muscle. Smooth muscle, basically involuntary muscle, because this type of muscle are not our under control and no striation are visible. They have no straightness, मतलब सीधा नहीं होता है. It is found in the wall of hollow organs such as the stomach, bladder, blood vessels and uterus. So इस लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना. Basically involuntary muscles are found in the hollow organs such as the stomach, bladder, blood vessels and uterus. These muscles are spindle shaped and have a single nucleus. So what is the basic difference from involuntary and involuntary muscle? Voluntary muscles are multinucleated cells, consist of. Same way involuntary muscle have a single nucleus and totally controlled by nervous system. The contraction of this muscle is very slow. बहुत जल्दी contract भी नहीं होता है and over long period they do not tire easily. बहुत जल्दी tired भी नहीं होता है. Contraction of these muscles help in regulating the diameter of blood vessels and parts of the respiratory tract. So different types of involuntary muscles actually regulate the diameter of blood vessels. So those basically involuntary muscles are found in the hollow region. That's why it regulates the diameter of blood vessels. Normally blood vessels का जो diameter है उसको बढ़ा देता है, कम कर देता है, जिस दौरान नॉर्मली रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है ज़्यादातर ऑक्सीजन घुसा सकते हैं हम लोग. Propelling content of the uterus, duct of glands and alimentary tract, and expelling contents of the urinary bladder and uterus. urinary bladder से नॉर्मली जो हम लोग वेस्टेज शरीर से बाहर निकाल देते हैं तो एक्सपेलिंग कंटेंट को निकालने में हेल्प करता है कौन? इनवॉलंटरी मसल. लुक एट द मसल, दे आर नॉट स्ट्रेट, मतलब ये स्ट्रेट सीधा नहीं होता है. नेक्स्ट, कार्डियक मसल. This type of muscle is found exclusively in the wall of the heart. This muscle is very important. It is not our conscious control, but when viewed under a microscope, cross-striped characteristic of the voluntary muscle can be seen. मतलब basically cardiac muscle is not our under control, but we can easily found them in the striped characteristic. I mean dark and light band as like voluntary muscle. Each fiber has a nucleus and one or more branches. The ends of the cells and their branches are in very close contact with the ends and branches of adjacent cell. I mean there are lots of micronucleated cells. Microscopically, these joints or intercalated disc can be seen as a line which are thicker and darker than the ordinary cross-striped. Look at here. Normally, the striped are dividing into many branches and there are lots of nucleus. I mean they are multi-nucleated cells. And between of them, there are intercalated discs are found between the joint. This arrangement gives cardiac muscle the appearance of a sheet of muscle rather than a very large number of individual fibers. ऐसे शेप देख के कैसे लगता है? Normally cardiac muscle are thin branches like structure, also straight, dark and light band, and also multinucleated. So this arrangement normally give a sheet of muscle rather than a very large number of individual fibers. The end-to-end continuity of cardiac muscle cell has significance in the relation to the way of heart contracts. A wave of contraction spreads from cell to cell across the intercalated disc, which means that the cell do not need to stimulate it individually. Normally, a disc जो है that control the stimulus of the cardiac muscle. मतलब this type of disc actually control the movement of cardiac muscle
That's why this type of muscle is not under control. Now, muscular contraction. Muscular contraction can mainly be categorized into a 4 types of contraction. They are isotonic contraction, isometric contraction, eccentric contraction, and the isokinetic contraction. So first of all, different types of muscular contraction का नाम तुम लोगों को याद करना है. These are isotonic contraction, isometric contraction, eccentric contraction, and the isokinetic contraction. First one is the isotonic contraction. In isotonic contraction, muscles contract and shortens under a constant load throughout the entire range of joint. मतलब जहाँ पे दो बोन ज्वाइन हो रहा है वहाँ पे जो हम लोग लोड और फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस दौरान मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन. द शॉर्टनिंग इज अ मसल. इस दौरान क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने के मसल जो शॉर्ट हो रहा है विच इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. मतलब मसल खुद को खींच के एक जगह पे बॉन्ड कर रहा है, दैट इज कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और डायनेमिक एक्शन और कॉन्ट्रैक्शन. We are most familiar with this type of contraction. So basically हम लोग जहाँ पे दो बोन ज्वाइन हो रहा है वहाँ पे जो मसल खुद को शॉर्ट करके एक जगह पे फ्यूज्ड करके एक कोई परफॉर्म मतलब कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन. नेक्स्ट, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. आइसो मीन्स शेम एंड मेट्रिक मीन्स लेंथ. तो आइसो और मेट्रिक का जो स्प्लिट किया हुआ मीनिंग दिया हुआ है तुमको ये भी अच्छे से पढ़ना है. आइसो मीन्स सेम और मेट्रिक मीन्स लेंथ. तो ये कॉन्ट्रैक्शन इज सेड टू बी आइसोमेट्रिक व्हेन टेंशन इन द मसल इज डेवलप्ड बट देयर इज नो चेंजेस इन द लेंथ ऑफ मसल. तो इसका मतलब क्या है, मतलब हम लोग कोई फोर्स और लोड अप्लाई कर रहा है मसल के ऊपर, इस दौरान मसल जो डेवलप्ड हो रहा है मतलब ये एक तो टेंशन मसल के ऊपर डेवलप्ड हो रहा है, मतलब देयर इज नो चेंज विल बी फाउंड इन देयर लेंथ. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन. स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है ये अच्छे से पढ़ना है. मतलब लोड अप्लाई करने पे नॉर्मली मसल का चेंज हो रहा है मगर उसका लेंथ का कुछ चेंज नहीं हो रहा है. मतलब वो 5 सेमी लॉन्ग है, उसके ऊपर हम लोग लेंथ अप्लाई करेंगे मतलब लोड अप्लाई करेंगे तो मसल खुद को खींच के शॉर्ट कर रहा है मगर उसका लेंथ सेम हो रहा है. दिस टाइप ऑफ contraction is known as static contraction because the joint angle does not change. जहाँ पे दो बोन ज्वाइंट हो रहा है नॉर्मली ज्वाइंट तो कभी चेंज नहीं हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल होल्डिंग अ वेट at arm's length, pushing against the wall of trying to lift a heavy object without overcoming the resistance. अगर पावर लिफ्टिंग हो नॉर्मली हमारा कुछ चीज़ हम खींच के ऊपर उठाएंगे तो नॉर्मली मसल का कुछ शॉर्टनेस नहीं हो रहा है, अगर ओवरलोड होने पे क्या हो रहा है उसका लेंथ भी शॉर्ट नहीं हो रहा है. दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज फाउंड and also known as isometric contraction. Next, identification of muscles. Identification of muscles in the body. First, latissimus dorsi. Latissimus dorsi. It is a pair of large flat muscle which covers the lower back. I mean हम लोगों का बैक पोर्शन का जो वेस्ट के ऊपर मतलब कमर के ऊपर जो लोअर बैक पोर्शन रीजन है यहाँ पे मिलता है latissimus dorsi, this type of muscle. It is one of the widest muscle in the human body. सबसे ज्यादा मतलब क्या बोले widest muscle कौन सा है, latissimus dorsi. Originates on the lower spine and ilium. स्पाइन और इलियम के बीच जो जॉइंट रीजन है वहां से ऑरिजिनेट होता है. और इंसर्शन प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द ह्यूमरस, मतलब ये यहाँ से इलियम से ऑरिजिनेट होने के बाद ह्यूमरस तक आता है, मतलब करीब हम लोग का नी पोजिशन तक आ जाता है. एक्शन, एडक्शन ऑफ आर्म्स, एक्सटेंशन ऑफ आर्म्स, medically rotates the arm at the shoulder joints. So this kind of action is performed by the latissimus dorsi. Now deltoid. Deltoid muscle is fleshy, rounded triangular muscle which forms the rounded shape or uppermost part of the shoulder. ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ना. Deltoid muscle basically found
अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द शोल्डर, शोल्डर के ऊपर वाला कंधा रीजन में जो नॉर्मली मसल फाउंड होता है दैट इज डेल्टॉइड मसल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमन शोल्डर मसल. So as a short question, but now what is deltoid? Deltoid is a special kind of fleshy rounded triangular muscle. It is found in the uppermost part of the shoulder and also known as shoulder muscle. Origin, anterior the lateral portion of the clavicle. Clavicle का lateral portion से originate होता है. Medical, acromion process and the spine of the scapula. Posterior spine of the scapula. यहाँ तक originates है, मतलब विस्तृत स्पाइन से स्कैपुला तक ये फैला हुआ है. और इंसर्शन डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी ऑफ द ह्यूमरस. ये चीज इतना डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार रीडिंग लगा लेना. नाउ रोटेटर कफ्स. रोटेटर कफ्स इज अ ग्रुप ऑफ 4 मसल that surrounds the shoulder joints and keep the ball of upper arm in the shoulder socket. The 4 muscles are, these muscles का जो नाम है, ये muscles बहुत अच्छे से पढ़ लेना. नेक्स्ट, वैसे ही सिर्फ दिस पोर्शन जो है ये पूरा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक बार रीडिंग लगा लेना, हो जाएगा. Actually, I have to complete the syllabus within very short time because already I have started the मतलब चैप्टर बहुत लेट से शुरू किया है, तो हम जल्दी जल्दी ऐसे छोड़ छोड़ के पढ़ा देंगे. दिस पोर्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, तो जस्ट एक बार रीडिंग लगा लेना. नेक्स्ट, पेक्टोरल्स. Pectoral muscle is a group of 4 muscles which are located on the anterior chest wall. सब लोकेशन बहुत अच्छे से पढ़ना, कहाँ पे दिखाई देता है, इतना डिटेल्स में जाने की कोई जरूरत नहीं है. Pectoral muscle is a group of 4 muscles which are located on the anterior chest wall. 4 मसल का एक तो ग्रुप है जो नॉर्मली दिखाया जाता है कहाँ पे, चेस्ट वॉल पे. दिस 4 मसल्स आर जो पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर, सार्टेरस एंटीरियर, सबक्लैविकस. सिर्फ मसल का नाम पढ़ लेना. और मैक्सिमम ओरिजिनेट कहाँ पे होता है, मतलब कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये थोड़ा पढ़ लेना. पेक्टोरालिस मेजर, इट इज अ लार्ज फैन शेप्ड मसल, ओरिजिनेट्स फ्रॉम शोल्डर गर्डल एंड द फर्स्ट 6 रिब्स. मतलब शोल्डर गर्डल्स और जो फर्स्ट 6 रिब्स है वहां से ओरिजिनेट होता है पेक्टोरालिस मेजर. नेक्स्ट, पेक्टोरालिस माइनर. Underneath pectoralis major is a thin triangular muscle known as pectoralis minor. तो pectoralis major का नीचे जो मसल है that is known as pectoralis minor. Originates from 3rd to 5th ribs. ये originates मतलब origination ये important है, ये थोड़ा पढ़ लेना. पर्टिकुलर रिब्स का नाम, मतलब फर्स्ट 6 रिब्स वहां से ऑरिजिनेट होता है क्या, पेक्टोरालिस मेजर. एंड सेम वे पेक्टोरालिस माइनर, अंडर द पेक्टोरालिस मेजर उसके नीचे मसल है दैट इज पेक्टोरालिस माइनर, ऑरिजिनेट्स फ्रॉम 3rd to 5th रिब्स. एक्शन, स्टेबिलाइज स्कैपुला एंड द लार्ज बोन ऑफ द शोल्डर. स्कैपुला मतलब पीठ में जो सबसे पराठा जैसा हड्डी है दैट इज स्कैपुला, एंड लार्ज बोन ऑफ शोल्डर, लार्ज बोन ऑफ शोल्डर का जो फ्लेक्शन है उसको कंट्रोल करता है कौन, ये पेक्टोरालिस माइनर. सिर्फ रीडिंग लगा लेना, दिस पोर्शन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, सेरेटस एंटीरियर. इट इज ऑल्सो प्रेजेंटिंग इन द फ्रंट ऑफ चेस्ट. चेस्ट का फ्रंट पार्ट में दिखाई देता है. इट फॉर्म्स द मेडिकल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला. स्कैपुला का बॉर्डर फॉर्म करता है, मतलब पीठ में जो हड्डी होता है पराठा जैसा उसका एक तो बॉर्डर फॉर्म करता है कौन, सेरेटस एंटीरियर. ऑरिजिन फ्रॉम लैटरल एस्पेक्ट्स ऑफ द 1st to 8th रिब्स. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रिब्स का पर्टिकुलर जो सेक्शन दिया हुआ है, फर्स्ट to 8th ribs. Next, subclavicus. It forms the axilla or armpit. Axilla और armpit से बनता है. It is a small and triangular in shape. Origin first rib and cartilage. First rib and cartilage से originates होता है. Action, depression of clavicle. Clavicle को control करता है. तो स्टूडेंट
I hope all of you understood what I've discussed in this video. So for today, up to this portion.